अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, और इसके अलावा बहुत से एडवांस और बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बहुत अच्छा हो और क्विकली हो, तो उसके लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपने न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+N, Ctrl+O to open an existing workbook, Ctrl+S to save a workbook, Ctrl+W to close a workbook, Ctrl+F4 to close Excel. Press F4 to repeat the last command or action. Shift plus F11 to insert a new worksheet. Press Ctrl+Z, undo an action. Press Ctrl+Y, redo an action. Press Ctrl+F2, switch to print preview. Press F1 key to open help pane. Press F7 functional key to check spelling. Press F9 functional key to calculate all worksheets in all open workbooks. Press Shift plus F9 functional key to calculate active worksheets. Press Ctrl plus Shift plus U to expand or collapse the formula bar. Press F11 functional key to create a bar chart based on selected data. Press Alt plus F1 key to create an embedded bar chart based on selected data. Press Ctrl plus F key to search in a spreadsheet. Press Alt plus F key to open the File tab menu. Press Alt plus 11 key, go to Home tab. Press Alt plus N key to open the Insert tab. Press Alt plus P key, go to the Page Layout tab. Alt plus M, go to the Formulas tab. Press Alt plus A key, go to the Data tab. Press Alt plus R key, go to the Review tab. Press Alt plus W key, go to the View tab. Shift plus F3 functional key to insert a function. Press Ctrl plus Home key, move to the beginning of a worksheet. Press Shift plus left or right arrow to extend the cell selection to the left or right. Press Shift plus space to select the entire row. Press Ctrl plus space to select the entire column. Press Ctrl plus Shift plus space
to select the entire worksheet. Press F2 key to edit a cell. Press Ctrl plus X, cut contents of a cell. Press Escape key, cancel an entry in a cell. Press Alt plus H to select a fill color. Press Alt plus H plus B to add a border. तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना होगा। सिमिलरली कुछ शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और पावर पॉइंट पे यूज़ करते हैं, वही आप इसी में यूज़ करेंगे। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपने बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है। इसीलिए सिमिलर आपने जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ की थी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करने के लिए, तो वो सेम वही कीज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। So guys, if you need more help with keyboard shortcuts, you can access help anytime by pressing F1 functional key. This opens a help pane and allows you to search for help on any topic related to Microsoft Office. तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और आपने किसी भी टूल से रिलेटेड इन्फो लेनी है या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा, कोई टूल समझ नहीं आ रही, कोई की समझ नहीं आ रही, तो आपने सिंपली F1 की प्रेस करनी है। तो F1 की प्रेस करने से आपके पास एक पैन ओपन हो जाएगा, हेल्पिंग विंडो। तो वहाँ से आपको जो भी इशू होगा आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप वहाँ से आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी। तो आपने F1 की प्रेस करनी है तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।